mother, he says. I'll never run away again. Sorry mom, मुझे माफ़ कर दो mom, he says. कौन बोला? छोटू ने बोला mom को, मुझे माफ़ कर दो mom. I'll never run away again. मैं कभी भी अब दूर भाग नहीं जाऊँगा. Students, hope you are doing well. Today we are going to learn a chapter from 1st standard NCERT book, Raindrops. The name of the chapter is Chotu. Let's get started. Chotu is a baby mouse. Chotu runs around. Chotu's mother calls, "Come back Chotu, come down now." Chotu is a baby mouse. Baby mouse. चूहे का बच्चा, baby mouse. Chotu is a baby mouse. Chotu is name of चूहे का बच्चा है. सो छोटू उसका नाम है. छोटू रन्स अराउंड, यहाँ वहाँ भटकता है, यहाँ वहाँ भागता है. छोटू रन्स, आर यू एंड रन इज भागना. छोटूज मदर कॉल्स, कम बैक छोटू. छोटू की मॉम बोलती है, मदर बोलती है. कॉल्स मीन्स उसको बुलाती है, कॉल करती है. कॉल्स, कम बैक छोटू, कम डाउन नाउ. यहाँ वहाँ भागता है, घूमता है छोटू, तो उसको वापस आ जाओ छोटू, वापस आ जाओ. कम बैक, कम आना, बैक इज रिटर्न. कम बैक, वापस आ जाओ छोटू. कम डाउन नाउ, नीचे आ जाओ. कम डाउन नाउ, कहाँ पेड़ पे चढ़ता है, यहाँ वहाँ भटकता है, तो कम डाउन नाउ इज नीचे आओ. कम डाउन नाउ, नाउ इज अभी नीचे आओ. छोटू डज नॉट लिसन. A crow picks Chotu up in its beak. Crow is कौआ. Picks, to pick up. To pick up किसी को उठाना, कोई चीज़ उठाना. To pick up. यहाँ पे थर्ड पर्सन है कौआ, इसलिए उसको s लगाया है. Picks up. A crow picks Chotu up. एक कौआ छोटू को उठाता है. पिक्स अप, उठाता है. इन इट्स बीक. बीक का मतलब है चोंच. उसकी चोंच में कौआ छोटू को उठाता है. छोटू स्क्विक्स. स्क्विक्स, टू स्क्विक इज जोर से चिल्लाना या फिर रोना. मेकिंग हाई पिच्ड नॉइज, दैट इज स्क्विक, टू स्क्विक. Chotu squeaks. A parrot comes by. A parrot comes by. Good morning, he says. Parrot comes by. Parrot comes by means crow के साइड में parrot आता है. Good morning, he says. Parrot क्या कहता है? Good morning. Hello, says crow. अब parrot ने कुछ बोला good morning, तो crow को बोलना पड़ेगा. तो crow ने भी बोला hello, hi. तो अगर क्रो ने बोला तो क्या हुआ? क्रो के मुंह में कौन था? छोटू था. छोटू falls into the soft grass. He turns around and runs home. छोटू नीचे गिरा. किस पे गिरा? सॉफ्ट ग्रास पे गिरा. सॉफ्ट ग्रास, मुलायम घास. He turns around and runs home. Turning is घूमना. Around, वो आगे से घूमा. एंड रन्स होम, वो अभी घर भाग गया. सॉरी मदर, ही सेज. I'll never run away again. सॉरी मॉम, मुझे माफ़ कर दो मॉम, ही सेज. कौन बोला? छोटू ने बोला मॉम को, मुझे माफ़ कर दो मॉम. I'll never run away again. मैं कभी भी अब दूर भाग नहीं जाऊँगा. Answer this question. Have you seen a mouse? Yes, I have seen mouse. Where have you seen it? Near a sink. What does it eat? It eats grains. What do you call a mouse in your language? Undir. Do you listen to your mother and father? Yes, of course. Have you done something which your mother and
father has told you not to do? My mother and father always tell me not to play with fire, but one day I played with fire and it was dangerous. So you should not do the things which mom and dad told you not to do. One of Diwali days, I was playing and leftover powder from crackers, I poured that powder on agarbatti and it was sparkling everywhere and my hand got burned due to that. So it is a big lesson for me. So you should also obey parents' words. Okay, what do you do? The crow picked Chotu up in its beak. You pick up things with your hands. The crow eats with its beak. You eat with your mouth. The crow flies with the help of its wings to reach home. You run on your feet to reach home. I have completed this chapter, so we will be back with another video. So stay connected to our channel, subscribe to our channel, like and share our videos. Team Ayanch looks forward. Where have you seen it? We have fun fair at our village, that is known as Gadda. So I have seen that merry-go-round in that Gadda. We call it as Gadda to that fun fair.